So we are the same challenges to and restoration of the Congress system, and I will try my best to sum up the part today only, or maximum day by tomorrow. Right. So 1971 election and the restoration of Congress. 1971 में इलेक्शंस हुए थे एंड कांग्रेस दोबारा वापस आ गई थी. The split in the Congress reduced Indira Gandhi government to a minority. Yet her government continued in office with the issue-based support of a few other parties, including the Communist Party of India and the DMK. During this period, and the government made conscious attempt to project its social credentials and was also a phase when Indira Gandhi vigorously campaigned for implementing the existing land reform laws and undertook further land sealing legislation. बात समझ में आई आपको? कि basically इंदिरा गांधी माइनॉरिटी के ग्रुप में आ गई थी, माइनॉरिटी में आ गई थी. कब? 1971 जब जो स्प्लिट कांग्रेस करने के बाद, कांग्रेस में दो भाग होने के बाद. लेकिन उसको बाहर से सपोर्ट किया किसने? कम्युनिस्ट पार्टी ने और डीएमके ने. Two parties and many other parties were also there. With the support of these two parties or other parties, right? What Mrs. Indira Gandhi did, she campaigned throughout India कि लैंड रिफॉर्म बिल जो है, जो इंट्रोड्यूस किया गया है, it is the best and in the favor of the pro poor, जो पुअर हैं, जो गरीब हैं, राइट, जिनके पास जमीनें नहीं हैं, और जो किसान हैं जिनके पास जमीन रहे, लैंडलेस farmers are there. This rule and regulation, this law is in favor of them. तो और उसने क्या किया कि सील कर दिया था, लैंड को सील कर दिया गया. In her party position in the parliament and seek a popular mandate of her program. और उसने popular party say, she demanded that everyone in his party should support this agenda, land reform bill. Indira Gandhi's government recommended the dissolution of Lok Sabha in December 1970. दिसंबर 1970 में इंदिरा गांधी ने कहा कि लोकसभा को डिसॉल्व कर दिया जाए, भंग कर दिया जाए. This was another surprising and bold move. The fifth general election to Lok Sabha were held in February 1971. February 1971 में दूसरा जनरल इलेक्शन हुआ. Okay, so अब क्या हुआ? रेस्टोरेशन हुआ कांग्रेस का, क्योंकि आई टोल्ड यू यस्टरडे आल्सो 1971 के अंदर there was a war between India and Pakistan and India was a winner. So Indira Gandhi came up as a towering prime minister of India, very strong lady. इसे iron lady भी कहा जाता. One lady was Margaret Thatcher from England. इंग्लैंड की एक प्राइम मिनिस्टर हुई है, उनका नाम है मार्गरेट थ्रेशर. यू कैन गो थ्रू द इन योर विकिपीडिया एंड योर इन अदर सोर्सेज आल्सो, गूगल और यूट्यूब, who was Margaret Thatcher. It is there that she was an Iron Lady of England, and Iron Lady of India was Mrs. Indira Gandhi. Now the contest, अब एक तरह की लड़ाई शुरू हुई. किसमें कॉन्टेस्ट हुआ? किसमें? The electoral contest appeared to be loaded against Congress R. After all, the new Congress was just one faction of an already weak party. Everyone believed that the real organization strength of the Congress party was under the command of Congress O. To make matters worse for Indira Gandhi, all major non-communist, non-Congress opposition party formed an electoral alliance known as Grand Alliance. अब कांग्रेस पार्टी को तो खत्म करने की योजना हो रही थी, राइट, कांग्रेस आर की तरफ से.
So to make matter worse for Indira Gandhi, major non-communist parties, एक तो communist party थी, who was supporting Congress, right? Communist party Congress को support कर रही थी. Non-communist party को ही कहा गया कि आप सब इकट्ठे हो जाओ. You should, unite under one umbrella. And that is SSP, PSP, Bharatiya Jana Sangh, Swatantra Party, Bharatiya Kranti Dal, many other CPI, and had the ruling part, except CPI, right, Communist Party of India, many other parties, they combined themselves together to fight against Mrs. Indira Gandhi. और उन्होंने अपना एक पार्टी का एक नाम दिया, उसका नाम दिया ग्रैंड अलायंस, राइट? ग्रैंड अलायंस के नाम से उनके नाम ग्रैंड अलायंस के नाम से पार्टी का नाम दिया गया, और जिसमें who the party who are not supporting Mrs. Indira Gandhi and her party, they came under one umbrella. Yet the new Congress had something that is big opponents lacked. It had an issue and agenda and positive slogans. लेकिन जो नई कांग्रेस थी ना, I'm discussing in new Hindi also, so that it should be a very much understandable, nicely understandable by you. आपने से पढ़ना नहीं है, उसको समझना है, इसको समझिए, इसको जानिए कि how was Mrs. Indira Gandhi a towering lady. वो इतनी एक तरीके से she was an iron lady, और अभी सभी कांग्रेसमैन अभी भी उसको याद करते हैं. Not only congressmen, many other from other party who are opposition of the Congress, they also remember that Mrs. Indira Gandhi was really a fabulous prime minister. So कांग्रेस पार्टी में वो था जो दूसरे पार्टी में नहीं था. जो which Congress? The new Congress, young Congress, led by Mrs. Indira Gandhi. जो उसमें कुछ ऐसे, उस पार्टी में कुछ ऐसी बात थी जो दूसरे पार्टी में नहीं थी, right? So it had an issue. उनके पास एक इशू था, एक एजेंडा था. Second paragraph, page number 96, third paragraph, second line. Third paragraph, page number 96, challenges to a restoration of the Congress system. Third sentence. The grand, और जो उनके पास था, मिसेस इंदिरा गांधी के पास था, what were the Mrs. Indira Gandhi and other people they have, other party they have, they were not having the same agenda. What Mrs. Indira Gandhi was having the agenda. What Mrs. Indira Gandhi having a positive slogan. एक positive slogan था, याद है? गरीबी हटाओ. याद है आपको? गरीबी हटाओ. गरीबी जो है, गरीबों के अंदर जो गरीबी है भारतवर्ष से, उसको खत्म करो, तभी गरीब कुछ कर पाएंगे. So the Grand Alliance did not have a coherent political program. जो political program मिसेस इंदिरा गांधी के पास था, वो दूसरे किसी पार्टी के पास नहीं था जो कांग्रेस में शामिल नहीं थे. Indira Gandhi said that opposition alliance had only one common program. Indira Gandhi ने कहा कि opposition के पास एक ही फॉर्मूला है, एक ही एजेंडा है, एक ही स्लोगन है. वो स्लोगन क्या है? इंदिरा हटाओ. What Indira Gandhi gave the slogan? गरीबी हटाओ. Then she said opposition is having only one slogan, Indira hatao. Remove Indira. Right. In contrast to this, she put forward a positive program, and it captured a famous slogan, Garibi hatao, remove poverty. Abhi maine aapko ye bataya. Garibi hatao. She focused on the growth of public sector. Public sector matlab kya jante ho? Industries ki growth of industries, right? She focused on the growth of public sector, imposition of ceiling of rural land holding. Rural का मतलब पता है ना? गांव के अंदर जितने भी बहुत ज्यादा बड़े बड़े जमींदार थे, उनके जमीनों को सील करना. And rural land holdings and urban property, और urban property को भी सील करना, जो ज्यादा जिसके पास था.
रिमूवल ऑफ डिस्पैरिटीज इन इनकम एंड अपॉर्चुनिटी। अब वो कह रही थी कि मेरी पार्टी जो है इसलिए लड़ेगी ताकि जिनको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, द पीपल हु इज हैविंग लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड द पीपल हु इज नॉट हैविंग एटलीस्ट गुड अपॉर्चुनिटी, द गैप इज वेरी बिग। इन दोनों के अंदर जिनके पास है, who have and who said who have not, इन दोनों के अंदर जो दरमिया है ना, फासला है, ये बहुत बड़ा है। It's too much big. She wants that this big gap should be reduced at the minimum level. मिनिमम से मिनिमम पे आ जाए ताकि गरीबी खत्म की जा सके और गरीबों को बेसिक एमिनिटीज उनको दी जा सके। So it is income and some job opportunities. Income भी हो और उनको job opportunities दी जाए। और abolition of princely privileges. Princely privileges का मतलब पता है ना, princely को जो पर्स दिया गया था, उनको प्रिंसेस को जो दिया जाता है पैसा, उनको हटा दिया प्रीवी पर्स। Abolition of princely privy purse through Garibi Hatao, Indira Gandhi tried to generate a support base among disadvantaged, especially among the landless laborers, Dalit, Adivasis, minorities, women, and unemployed youth. जो ये गरीबी हटाओ का जो स्लोगन था, इसको मिसेज इंदिरा गांधी को पता था, she knew it, that it will be a hat-trick slogan and it will be eye-catching slogan. सभी इसको कैच करेंगे। तो वो क्या करना चाहती थी कि सबसे पहले गरीबी हटाओ से पहले वो उनको जिनको द पीपल हु वर डिसएडवांटेज्ड, शी वांट टू गिव सपोर्ट टू देम, गवर्नमेंट वांट टू गिव सपोर्ट टू देम, जो डिसएडवांटेज्ड ग्रुप थे, स्पेशली अमंग लैंडलेस, जिनके पास जो किसान थे, लैंडलेस थे, पर फार्मर्स थे, दूसरों की जमीनों पे खेती करते थे। आपको भी पता है पट्टे पे खेती करना, न्यू इट, many people, many farmers, landless farmers, they used to work in your field, right, and you used to pay them. So landless farmers, why they are landless farmers, poor farmers, because they don't have the land, उनके पास अपनी जमीनें नहीं है, जमीन थी तो चली गई, खत्म हो गई, landless farmers. Then landless laborers, मजदूर है, राइट, उनके पास लैंड नहीं है, जमीन नहीं है, कहाँ पे काम करेंगे, दूसरे के खेतों में काम करते हैं, लेबर मजदूरी करते हैं। दलित एंड आदिवासी, दलित पीपल, राइट, आदिवासी जो जैसे छत्तीसगढ़ में आदिवासी रहते हैं, जो बहुत पुराने सालों से वहीं रह रहे हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज एब्सोल्युटली नन ओवर देयर, बिल्कुल जीरो पे है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो आदिवासी, माइनॉरिटीज जो मेजॉरिटी जिनका ग्रुप बहुत ज्यादा है, माइनॉरिटी जिनकी जो बेसिकली नंबर है बहुत कम है। वुमेन एंड अनएम्प्लॉयड यूथ, हमारे देश में वुमेन का उस वक्त तो वुमेन की हालत बहुत ही ज्यादा इट वाज नॉट वेरी गुड कंडीशन ऑफ वुमेन एट दैट टाइम, ऑल्सो 1970s की बात बता रहा हूँ, राइट। विडो वुमेन की कंडीशन तो आपको पता ही है। तो वुमेन कंडीशन दे वर नॉट इवन वेरी अब तो काफी चेंज हो चुका है, सब कुछ चेंज हो गया है, लेकिन उस वक्त 1970s के अंदर द कंडीशन ऑफ वुमेन वाज नॉट अप टू द मार्क, दे वर नॉट हैविंग गुड conditions at home and at the working place also. Women and unemployed youth, वो यूथ जो पढ़ी लिखी थी, अनपढ़ थी या अनपढ़ भी थी या थोड़े बहुत पढ़े लिखे थे, दे हैव अ गुड आर्मी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयड यूथ थे। जब एक यूथ अनएम्प्लॉयड हो जाता है, फ्रस्ट्रेशन बहुत बढ़ जाती है। in our India, lot of educated, highly educated, unemployed youth. I told you in the class also,
Many youth, they are postgraduate. Still, I'm not saying it's a very good scenario now these time that unemployed youth getting good job and all. No, I'm not saying it. कुछ चेंजेस हुआ है, बहुत सारा चेंज होना बाकी है. कुछ चेंज हुआ, लेकिन ज्यादातर का काम होना बाकी है. एम्प्लॉयमेंट देना यूथ को बहुत जरूरी है, बिकॉज दे आर गेटिंग फ्रस्ट्रेशन. And even those people, those youth who are educated ones, if they are unemployed, that is a frustrating aspect for them. Right. So, women and unemployed youth, the slogan Garibi Hatao and the program that followed it were part of Indira Gandhi's political strategy. ये इंदिरा गांधी की पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी थी कि इस स्लोगन को जितना हो सके एनकैच करना पड़े, तभी कुछ कर पाएंगे. Right? It was the Indira Gandhi political strategy of building an independent nationwide political support base. इसके ऊपर इनको काम करना है. Then she knew it, and she knew also that this will be a very good aspect. So what I have done election. This recapturing you. What I have done election, 71 election, and restoration of the Congress system, and the contest 71 का जो कांग्रेस था, and they had all other non-Congress party. They want to get united under one umbrella. That is, she said, Mrs. Indira Gandhi said कि उनके पास कोई एजेंडा नहीं है, जो बेसिकली non-congressmen है, and the people from other Congress, they want to remove Indira Gandhi. So they said Indira hatao, and I said Garibi hatao. Mrs. Indira Gandhi said, my slogan is Garibi hatao. मेरे जो opponent है उनका slogan है कि इंदिरा हटाओ. So she encashed it, and she knew that this will be a wonderful slogan. Right? So जो गरीबी हटाओ का program था, and it was a well-planned strategy of Mrs. Indira Gandhi, well-planned political strategy of Mrs. Indira Gandhi. So we have done it. Then the outcome and after. Outcome मतलब results, and after इसके बाद क्या घटनाएं घटी. The result of Lok Sabha election 1971 was a dramatic and was a decision of hold these elections. The Congress CPI alliance won more seats and votes than the Congress had ever won in the first 4 general elections. इस 1971 इलेक्शन में कांग्रेस को इतना वोट मिला कि जिसको वो उन्होंने कल्पना नहीं की थी. नंबर 1. Right, Congress had ever won in the first 4 general elections. पिछले 4 general elections में basically उनको उतनी सीट नहीं मिली जितनी की कांग्रेस आर को मिली. कांग्रेस आर का मतलब है requisition, and requisition party was supported by CPI and other alliance, some other alliance also. Right, so the combined won 375 seats in Lok Sabha and secured 48.4% votes. She secured 48.4%. Right, Indira Gandhi Congress won 352 seats and was about 44% of the popular votes of its own. Contrast this as the program of the Congress, so the party with so many slots. What do you mean STALWARTS? Slots का मतलब होता है always loyal to some organization. Some people are always loyal to some organization. Many people are always loyal to Congress organization. Like Ghulam Nabi Azad. We can call him slots. Slots. T is silent over here. Slots. That is always loyal to some organization. Could get less than 1/4 of the vote secured by Indira Gandhi party and win merely 16 seats. With this, the real Congress and restored to the dominant position in India politics, the grand alliance of the opposition proved a grand failure.
The grand alliance of the opposition proved a grand failure. Their combined tally of seats were less than 40. मतलब she came up as a winner. In sum up, Mrs. Indira Gandhi in 1971 election, she came up as a towering winner. वो सबको उसने कहते हैं ना हिंदी में धो डाला, right? तो ग्रैंड अलायंस जो इंदिरा गांधी के अगेंस्ट थी, उसको सिर्फ 40 वोट मिले और मिसेस इंदिरा गांधी को नियर अबाउट 352 सीट्स मिली, राइट? तो इस तरीके से शी वॉज द विनर. Soon after 1971 लोकसभा इलेक्शन, अब क्या हुआ? लोकसभा इलेक्शन हुआ और बिल्कुल लोकसभा इलेक्शन के बाद एक पॉलिटिकल सिनेरियो, पॉलिटिकल क्राइसिस उभर के सामने आई. पॉलिटिकल क्राइसिस उभर के सामने आई एंड दैट वाज 1971. देखिए एक कार्टून है, आई वांट टू शो अ कार्टून आल्सो, राइट? मिड टर्म इलेक्शन है, ये दिखाया जा रहा है. मिड टर्म रेस है ये, जिसमें फर्स्ट इज मिसेस इंदिरा गांधी, सेकेंड इज मिसेस इंदिरा गांधी, थर्ड इज मिसेस इंदिरा गांधी. फर्स्ट में क्या लिखा है? स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूंसी. कौन है उसमें? मिसेस इंदिरा गांधी. सेकेंड में क्या है? वीक कॉन्स्टिट्यूंसी. उसमें कौन है? मिसेस इंदिरा गांधी. थर्ड कौन सा है? डाउटफुल कॉन्स्टिट्यूंसी. उसमें भी कौन है? मिसेस इंदिरा गांधी. इट मीन्स दैट मिसेस इंदिरा गांधी इज एवरीवेयर. चाहे वो हार में है, चाहे वो जीत में है, चाहे वो कहीं भी नहीं है, वहां पर भी मिसेस इंदिरा गांधी है. So she came up as a winner after 1971 election. Okay, so this is a cartoon, midterm race or midterm election, whatsoever. Soon after the 1971 Lok Sabha election, a major political and military crisis broke out in East Pakistan, now Bangladesh. आपको पता है कि पाकिस्तान के साथ हमारी 4 लड़ाइयां हुई. पहली लड़ाई 1947 में हुई रजाकार के साथ. रजाकार थे जो पाकिस्तान ने भेजे थे. फिर हुआ 1965 में. 62 में भी एक लड़ाई हुई थी चाइना के साथ. 60 हम वो हार गए थे. 65 में लाल बहादुर शास्त्री जी थे प्राइम मिनिस्टर, वो हम जीत गए. उसके बाद हुआ 1971 वॉर बांग्लादेश के लिए. ईस्ट पाकिस्तान, नाउ बांग्लादेश, कैपिटल इज ढाका. हम शेख मुजीबुर रहमान वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ दैट. सो 1971 इलेक्शन हुए और उसके बाद ईस्ट पाकिस्तान को बनाने के लिए एक जद्दोजहद छिड़ गई. As we have already read in chapter 4 that 1971 elections were followed by a crisis in East Pakistan and Indo-Pak War. Indo-Pak War शुरू हो गया, right? Indo-Pak War, India-Pakistan War शुरू हो गया कब? 1971 के इलेक्शन के बाद. By crisis in crisis in East Pakistan, and that was a tremendous, support for Mrs. Indira Gandhi. उसके में ये छवि थी कि ये इतनी पावरफुल है कि किसी देश को भी तोड़ सकती है. India was divided in 1947 by the demand of Pakistan. Pakistan was also divided under the name of Bangladesh, Sheikh Mujibur Rahman. Okay, so Pakistan and Indo-Pak War leading to the establishment of Bangladesh. Bangladesh बनाया गया और 93,000+ soldiers of Pakistan, they surrendered before Indian soldiers. 93,000 Pakistani soldiers, they surrendered before India, before Indian army. जनरल नियाजी थे और हमारे यहाँ पे जगदीश सिंह अरोड़ा, मिस्टर अरोड़ा थे हमारे यहाँ के लेफ्टिनेंट जनरल. These events added to the popularity of Mrs. Indira Gandhi. मैंने भी आपको बताया कि इसने मिसेस इंदिरा गांधी के नाम पे 4 चांद लगा दिए. हिंदी में कहावत है ना, 4 चांद लगाना. तो हिंदी 4 चांद लगा दिए. Even the opposition leader admired her statesmanship. जो ऑपोजिशन लीडर थी ना, वो भी मान गई कि मिसेस इंदिरा गांधी में सचमुच
political will hai. She can do something. She can break the country also, any other country also, as Pakistan was a staunch enemy of India. उसने सोचा था कि इंडिया को तोड़ देंगे, जैसे पाकिस्तान तोड़ा है ना, कि इंडिया को और तोड़ देंगे, पर उसके ही टुकड़े हो गए. Even opposition party supported her and statesmanship. Her party swept through all the state assembly election held in 1972. State assembly election हुए थे 1972 में and पूरी तरह से जीत गई. उसके opposition में कोई खड़ा ही नहीं हो पाया. Nobody was, no other party was there to fight the election against her. She was seen not only as a protector of the poor and the underprivileged, but also a strong nationalist leader. अब उसको लोग ये भी कह रहे हैं कि इंदिरा गांधी जैसे nationalist leader जो basically जो support करती हो किसकी, poor people की, who is supporting poor people also, who is supporting a national cause also, and she is a nationalist leader, देशभक्त leader है वो देश के लिए कुछ भी कर सकते. She can do anything for the country. This was the popularity for her. So and she supported unprivileged. गरीबों की मददगार थी, गरीबों की मसीहा के रूप में सामने आई. But also a strong nationalist leader. The opposition to her, either within the party or outside of, simply did not matter. कौन उसके पक्ष में है, कौन उसके पक्ष में नहीं है, everyone supported. क्योंकि जब देश के ऊपर बात आती है ना, तो Indian politics is such कि they support one person who is supporting India. वो अपने लीडर को सपोर्ट करते हैं. तो Mrs. Indira Gandhi was a towering leader. She was supported by many other people in the party, outside the party, in favor of party, in opposition of party, right? And she came up as a leader of who supports the underprivileged, गरीबों की मसीहा, a nationalist leader, a देशभक्त leader, and state assembly में उसने सब दूसरे opposition को जोड़ा. Today is this is the end of the chapter today. I will try to finish up by tomorrow, and rest we will revise tomorrow again. Till then, take care and have a nice time. Do revise the chapter. Thank you. Have a nice day.